Again.
I'm not coming in. Lecturer under the yellow. So it's very serious matter. So that's it. Just Shall we do today maps of India for you? yeah, finally. Oh, finally. What is that finally? It's the best topic I need to topic and Oh. be. I need to learn. Yeah, but Topo did we finish? Topo is done. Topo. Yeah, I Topo. Friday. Yeah, wait. Topo. That's a key. मैंने एंग्री से समझा. स्कूल में सिखाया है टोपो तो मेरे को समझा But I have not started Topo, not here. No, wait. I didn't start the Topo. John. And the maps of India, she will be one. No. That is not in my hand. I was doing what natural vegetation. Oh yeah. So एक काम करो, maps of India करूँ. You know. हाँ. So let's say please imitate. No. No, आप बोल नहीं So very good. Correct. Then what was the topic? Vegetation complete? Done. Then what is the next? Friday program में एंग्री में हम सब. That she will only complete. देखो natural vegetation क्या है देखो. Order is so. Because starting is not an issue, but technicality you won't understand. Right? है ना? You are only ना? What? Your name side right. Finish. Parimishta. Write down the heading. What are the sources? Anyone just give me the textbook. Take my mobile notebook. Did you sign for the attendance for both lectures together only? So write the introduction. Meaning where? थोड़ा सा ही नोट देंगे then directly मिल है ना. Pop it on the soul. This month or this year, I'm very happy that portions are done. So, let's go.
Okay. Okay, great. What do you feel this chapter is in store for you? Water resources. Is India having sufficient? Apparently, rivers. Ganga, right? Yamuna, or कहाँ से कहाँ filter करना? Yeah, this is only soft, I think it's soft, jeera and ajwa. I have this digestion and bloating issue. Godavari, What else? Mahanadi. Very simple. आप लोग ऐसा नाम बोलने से अच्छा है बस look at. We have one is North Indian rivers, correct? The other is South Indian rivers. This is generally perennial rivers. You know what are perennial? And these are non-perennial. As she said, River Ganga is not a river. It is a river system, correct? The longest river in India. The Pious River in India. And lot of tributaries. Yamuna is the longest tributary of River Ganga. Then we have non-perennial rivers, like somebody told me about Narmada and Tapi. The only two rivers in India which joins Arabian Sea. So क्या आएगा exam में? These are west. Come on. West. All are east. ये गंगा पकड़ो, यमुना पकड़ो, सब कुछ Bay of Bengal में जाके join हो. And then we have a river which is coming from Sangpo, China. What is it? Sangpo, है ना? जब इंडिया में तो उसका नाम क्या चेंज कर दिया? ब्रह्मपुत्र. In fact, हमारा ब्रह्मोस. And what is Mos? Moscow. Moscow. Yes. Both Russia and India together developed. Was he's that side there. अभी देखो Russia हाँ वो अभी you made a project था अभी देखो अभी आज का न्यूज़ है Russia offers India R-37 missiles और game changer for IAF already हमारे पास rumors हो है Russia तो already अपने पास Su-57 दे दिए and he is giving missiles. We accept. So let us have a small clash between them. Because this time China will definitely poke its nose. Because Prime Minister has promised, अभी हम बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो केव को पकड़ने में लेकर आ जाएंगे. Okay, so when we talk about this water, it is one of the most important resource everybody knows. India being an agricultural country, we require it. So we are not only studying what is water resource, we are going for conservation. I mean, why conservation? For future. Okay, presently that future क्या करेंगे? A lot of pollutions. Yeah? The biggest, I cannot say scam of AP, Arvind Kejriwal was Narmada. Not Narmada, वो होता था. वो दिल्ली में देखा बोलता था मैं डूब के लगा हूँ. What is the name? जो भी है पिछले 2 साल इलेक्शन से बोलता था मुझे वो इलेक्ट करो मैं उसको साफ कर दूंगा मैं डुबकी लग रहा हूँ जब भी बोलता था उसमें बहुत सारा झाग निकलता था ऑल केमिकल्स एंड वाटर अरे ताजमहल से भी वो जो रिवर है ना अगर तो फिर so what is conservation? What is conserve? See. यार मुझे synonyms नहीं चाहिए meaning बताओ meaning in a SBI बैंक 4 लीटर मैंने डिपॉजिट किया बोलेगा नहीं चाहिए साहब इधर ऑलरेडी पानी बहुत है. What is conservation? Preventing water pollution. Okay. And maintaining the बोलो purity and quality of water. तुरंत बिस्लरी का ऐड क्या बिल्कुल पीता है मालूम क्या उसको भी मालूम नहीं लेकिन वो तो कलकत्ता का पानी पी रहा था अभी आपने ऐड का पैसा देकर तो तुरंत वो बिस्लरी लेके आए
अच्छा कैमल प्ले से करता है, अरे पैसे के लिए सब बुक होता है। अच्छा बहुत अच्छा है सर, आपका बहुत फाइटिंग आंसर है ना। वो ऐड में दो बिस्लरी दो कैमल दिखता है ना, और ये कैमल को इसका नाम भी है कैमल का। कैमल का अब कोई पूछता है। अच्छा। तो मैं बोलता हूँ कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या है, यू एंड मी आर ओपनिंग दैट ऐप क्लोज ठीक है and then I am putting all examples and what ये क्या होता है, वो क्या जो बन से पिछले 15 मिनट से काम कर रहा है ना, क्यों सर मैं बात क्यों सी है, मैं बस उधर ही करता So today if rainfall is not good in India, what will happen, we are also like Arabs हैं, पानी नहीं मिलती, अरे मिलती नहीं, पेट्रोल सस्ती, हाँ किसी भी ऐसा लोगों को पूछो हमारे देश में वल्ले अभी भी बहुत मतलब क्या सस्ती, मतलब पानी नो नथिंग तो पेट्रोल की कीमत। So India is one country which is having very good resources, but then careless management, dumping of waste, है ना, एंड हम लोग जो डाइंग और केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो तो अपना मुंह तो डायरेक्टली रिवर में खोलता है, ये लेके जा पानी, बेचारा कल तक एक ही कलर में आता था, अभी सब मल्टी कलर में आने लगते हैं। ये मतलब एशियन पेंट्स, दीपावली आएगा ना, ये ना दीपावली का पेंट का कोई संबंध नहीं, बट सबसे ज्यादा पेंट का लेकर दीपावली में ना हमारे घर में है ना पर्दे सब मनाते हैं दीपावली, बट मैं नहीं मनाती, क्यों, पूरा फैमिली में खर्च करे सर, मैं तो पुराना शर्ट पहन के मारा सर, ये भी कोई दीपावली है, जो दीपावली निकाल दिया फैमिली का दिन क्या दीपावली, और बच्चे मन के सब्जी है ना, ड्रेस चाहिए नया, शूज नया चाहिए, वेयर प्लीज ना यार चुप रहो सर, वापस आके लिपस्टिक वो भी ले ले छोड़ मत, दीपावली के लिए दीप चाहिए, दीप चाहिए है ना, और ये चाहिए, वो तो हमारा नेबर के अच्छा लगा, बोले क्या आग लगती है ना, ऐसा बोल के बहुत सोना लगता है, बहुत हीरा है, क्या बोलूं मैं, अभी स्टार्ट हो, कल वो लड़की के साथ कैसे चिपक थी, नहीं सो, मैं क्या बोलूं, आग तो लगती है उससे, लड़कियों के बारे में थोड़ा बेटी ना मेरी कैसे बोलती हूँ उसको, कितना समझा है, मम्मी को क्या समझाया तूने उसको, मत जा तो जाती रहती है, हाँ ये चीज कोई तो एक लड़का आता है आपने कुछ लिफ्ट लगाया है, नहीं बट अच्छी है आप, फिर मैं चलूं, मैं ऑटो वाला नहीं कल आती हूँ, आज का फोटो खुद की बेटी चार के साथ कि पांचों के साथ आई है करते वो तोड़ देती है ना, बट अपने बारे में बोलती है नेबर्स, और मोदी जी ने क्या बोला, नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी, मोदी जी क्या होता है, नेबर को पहले ठोकूंगा, अभी बेचारा पाकिस्तानी ठोका हुआ नेबर अपने, और फिर ठोकर खाने के लिए तैयारी होता है, व्हाट डज इट मीन सर, इंडस वाटर आपने देखा क्या, हाँ क्या क्या मोदी जी ने दो उसका ट्रिब्यूट को कट कर दिया, और ये लोग उधर चटाई वटाई डाल के अल्लाह मियाँ, मोदी जी बोले कितना लोग नमाज पढ़े, चल रहे बोल पानी बोल अल्लाह निकल गया। ये कौन सा बॉम्ब था मोदी का, वाटर बॉम्ब था, वाटर, अच्छा ऐसे भी बॉम्ब बनता है, अबे ये फ्लड से निकले, खुदा ना खास्ता डायलॉग मत मार, तो खली मिलेगा तो मुझे, है ना, और जाते जाते भी कश्मीर कश्मीर तो बोल ही मत, फिर निकल पड़ेगी फिर तो, so we believe country like India which is having sufficient source, but then problem increasing population, increasing pollution, industrial use, and diversification of use of water, hydro, agriculture, है ना, and iron and steel industry, हर जगह water use होता है, तुरंत बचा है कोल्ड ड्रिंक लेकर, सर इसमें भी है ना, एकदम अरे पानी है सर, फिर इसमें अरे कलर है सर,
और हर एक वाटर बॉटल में लिखा है नो शुगर्स आर नॉट एडेड। सच बोल रहा हूँ, आप एक परसेंट सिप मार के सर 5 किलो डालेगा तो उसमें दैट इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। इसलिए कल है मम्मी पापा का मेडिकल। We believe that India is one country. Sooner or later, has called for a new setup. Sooner or later, we are doing और आपको भी है water harvesting. ये कौन सा नया harvesting है? Wherever possible, save the water. तो तुरंत हम ब्रिटिश लोग की तरह टिश्यू पेपर थे लोग पानी यूज करते। फिर क्या होता है वाटर हार्वेस्टिंग? कुछ नहीं है सर, वो जो रेन का पानी आता है ना वो खड्डा के अंदर। This is the proper way to explain. Oh, we dig for rainwater coming and not going to gutter, going here. Rainwater. So Sachin Tendulkar, I'll show his house. He's the first one of the cricketer who has made in his house rainwater harvesting. मतलब excess पानी रोड पे या गटर पे मत देना because this is pure. Yeah? So there are various ways and means through which we'll be studying this chapter. Okay? चलो अभी ये लिखो इंडिया रिमोट हार्वेस्टिंग डिटेल में है, वाटरशेड है, इरिगेशन है, खत्म। सोर्सेस बोला है, एक मिनट, नीड फॉर कंजर्वेशन इतना ही है, चलो ठीक है। इंडिया एंड एग्रीकल्चरल requires fresh waters in a very large scale. Require fresh water in a very large scale. उसको due to the following reasons: water conservation, due to, did I say? Due to the following reason, the water is become more important. हाँ, उसमें point number 1 become more important. So we will write like this, 1, 2, 3, 4. Okay. कितना चिंटू सा बनाया है और पूरा इंडिया को चलाया तो याद रहेगा। How many main types of river we have? River system. ये बहुत अच्छा। अरे river system तो भी कुछ बोलते हुए बड़बड़ कुछ चल रहे। North Indian rivers and South Indian rivers बोलना। पर क्या होता है? What are North Indian rivers for? Perennial. हाँ. What is the meaning? Low water is flow. आप लोग को मैंने ये एग्रीकल्चर चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने को। क्या बोला? यूएसए के अगेंस्ट फोर्थ प्लेस वाले अगेंस्ट वाला। क्या बोला? इतना मैं इसमें नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल है। एक हो गया। फिर मेरे लेक्चर चलो तो मुंह नहीं दूसरा। फोर्थ प्लेस है। फोर्थ प्लेस है। Too good. Congrats. 9th में। 10th में भी। तो आप लोग दोनों किसका पार्टिसिपेट करेंगे? हमारे स्कूल में चांस नहीं देती सिर्फ 2-3 लोगों को लेके गए। क्या? ठीक है। लिखो पॉइंट नंबर 1 you write over utilization of available water. Over utilization or exploitation of available groundwater. 2,
irregular and uncertain rainfall. उसके वजह से भी वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. What is that? Show your hand. What is the group ना? वो हाथ बता. वो. अरे वो मिडिल में वो भी for. हाँ बता तो. ऐसा बता तो सही. Is it separate or it is वैसे? तो थ्रेड के बीच में प्लेस है. हाँ. मम्मी ने. तो मतलब थ्रेड के बीचों बीच it is placed and you have to just tie it. I just got it from my mother. हमारे ऊपर तो हाथ लगा मेरा कोई नहीं. कोई लगा हाथ पर पैर भी लगा. है ना आपके ऊपर? नहीं है. ठीक है. What is this evil like? Means what? सारे observe नहीं है. सारे negative energy Absorb कर लेता. तो मतलब मेरे में negative energy लगा ना. Absorb थोड़ी. Repel करे. हाँ. Okay. Then right. Increased agricultural production. Increased agricultural production. So more agricultural production, then we need more water. है ना? Then industrialization and urbanization. Industrialization and urbanization. Now tell me why industrialization or urbanization से पानी का क्या problem आएगा? You are telling the pollution. I'm asking the conservation reason here. Industrialization, so why do you need more water? You know, iron and steel, it makes maximum use of water. Is it true? Iron and steel Yes. जब वो गर्म होते हैं ना उसके ऊपर Better. उसके ऊपर वाटर डालते हैं तो ऐसे थोड़ा सा correct. He's absolutely right. Cooling and solidification बोलना. तो ऐसा बोलेगा जब गर्म आता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा जल बीता है. क्या बोलेंगे? Cooling and solidification. Which other industry uses water? Gold. Which industry? Gold हो गया. हाँ. Hydro. वो use किधर करता है? अभी generation है. Then use. Dyes, chemical plants. You know what are dyes? Yes. Color बनाने वाला. And हाँ? tie and dye. Tie and dye industry. What else? There are so many. हाँ, he's correct. Leather का वो सी तो ऐसा बहुत अच्छा चेंबूर और गोविंद के बीच में ना मैं जब भी कॉलेज जाता था वाशी से हम ट्रेन लेते थे. I used to get down to Kurla से जाता. तो चेंबूर और गोविंद के बीच में इतना बदबू इतना मतलब इतना I was rounding about कि ये हो क्या रहा है ये तो कुछ नहीं तो लेदर बस ना लेदर बोलते गर्म पानी में एक तो बॉईल करके उसको you know that the skins and वो क्लीन करने के लिए भी वो उसका पूरा बाल निकालना पड़ता है ना. हाँ शूज तो लेकर कर सकते हो बेल्ट तो लेकर कर सकते हो इसका मतलब जो भी मैं यूज करता हूँ जाके खुद ही बनाओ. हाँ वो भी है but that smell ना I don't know it's something ऐसा लगा कि साउथ हुआ एक साथ मारा है. हाँ बहुत गंदा बदबू होता है. And मैंने उधर के हमारा प्रोजेक्ट था तो उधर के लोग सब आके कुछ नहीं कौन सा स्मेल आ रहा है मतलब मुझे भी मालूम नहीं. हाँ तो कुछ स्मेल ही तो नहीं है इधर. मतलब तो कितना साल पहले लगा था 15 साल तक और नाक का वो है ना बंद हो गई ना तो बस हो गए. Then you see our own NMC people garbage van. तो ऐसा करता है जैसे कि बहुत बड़ा टॉम क्रूज का कोई मूवी में है ना. ए दादा या तुम्ही चलो ऐसे कचरे में भी उनका मस्त है. And अभी देखता मैंने बेचारे ग्लव्स वगैरह पहनते हैं वरना तो वो भी नहीं हम मास्क पहनते हैं तो कम दे. मतलब हमारा एनएमसी का गार्बेज जो जैसा ना एक जगह से कचरा उठाता है पूरा सिटी में घुमा ले लिया बस चला आगे.
I don't know whether you have traveled out of Mumbai in car or two-wheeler. सबसे ज्यादा मुझे टेंशन आता है इसका, है ना? And even she also accepts. फिर हम लोग तो दूर से एक बदबूदार एक कुछ तो बिल्डिंग देखते हैं, आ गया, बोले क्या? अरे शौचालय है। And उसमें लिखा रहता है ई क्लीनिंग, ई टॉयलेट में रखे, ई क्या ई गंदा मत हो जाए। तो क्या बोलते सर आप जो मतलब अभी पहली बार आ रहा हूँ, सर आप लोग के जैसे आने वाला ऐसा बोल, जैसे कि मैं 15 बार इधर ही आके गया सुबह से लेके शाम तक, तो नो सर हमको तो कोई टेंशन नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बोले क्यों एक बार मैं सर आप नहीं, बोले क्या सर आप नहीं है बोल दे। सबसे बड़ा इनका महाराष्ट्र गांव में जो रुकता ना वो सबसे सुबह उठ के पहले ब्रश करके देखते तो बाथरूम में टॉयलेट दोनों नहीं। वो गाँव जाते तो हाँ। भी बाहर ही करते हैं। हाँ तो लोग ऐसे एक छोटा सा लोटा लेके बोले ये क्या है, तो मैंने महाराष्ट्र ये ठीक है सेम वाटर मतलब बनता है क्या पानी? अरे बहुत ज्यादा है, मैं तो कल आधा लोग खाली नहीं करता फिर तो। अरे हम लोग तो पूरा यूनियन के साथ जाते हैं, तो लोग मुझे चेहरे लगा तुम्हारे जिससे नहीं है मेरे किसी क्या है वो नहीं है। साउथ इंडियन कितना पानी वेस्ट करता है, तुम कितना करता है? आधा लीटर पानी में 6 जन का एक साथ साफ हो सकता है। Don't you think this is amazing? हाँ अभी क्या करें ना, मुझे एडवर्टाइजमेंट पसंद नहीं। अरे ये गंदा है, ठीक है ना पानी कंजर्व करो, तो स्टूडेंट को ऐसे लेक्चर देता है कंजर्वेशन यहाँ से स्टार्ट करने का, मतलब कहाँ से पीछे से है ना? बोला ये यार लिविंग इन अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ वाटर सेव करना जरूरी है। और वो पानी हाथ खाना खाने के बाद हाथ भी धोता है सब पूरा पहला पहुंच लगता है मतलब है ना? इनफैक्ट दिस मलय एंड ईरानियन पीपल आई हैव सीन एक दाना किधर भी चिपका नहीं रहना, फिर जाके हाथ धो लेते हैं। मैं नो नीड टू वॉश ऑलरेडी वॉश तेरा हाथ धोया भी ठीक है, प्लेट भी नहीं छोड़ मतलब आई टू वॉश द प्लेट्स मतलब आई ऑलरेडी वॉश्ड इट 2 टाइम्स है ना? तो सोचो उसका टाइम कितना बड़ा रहेगा भाई सबका ना। मलयाली से मले मतलब मलेशियंस, तो लोग बोलते तुम्हारे जैसा इंडियन में होटल में खाना मंगाता है आधा खाना तो नीचे गिराता है बाकी खाना प्लेट में रखता है, खाता क्या है? मतलब I respect them for one thing, they don't waste even a single food items or eatables. हम मम्मी पसंद नहीं तो तुरंत बच जाता है रख ले, और मम्मी भी जाके मांगती और पापा बोलते मेरे पास बनता ऑलरेडी खाना पड़ा। हाँ there are so many NGOs in Mumbai, I think नवी मुंबई भी है मैंने सुना, जिसके घर में भी ये शादी और पार्टी होता है ना, you have to just give them a missed call, बेचारा रात को आते हैं आपका सारा बचाव खाना लेके फूड रिसाइकलिंग और उसी टाइम पर उसको गर्म करके ये नया करके सारे गरीब बच्चों को, और हमारा पेट इतना लेके आता है तो खाना ठीक से नहीं बना है सब चलो। हाँ वैसे तो मैं 8-9 खाता था, खाना बहुत अच्छा नहीं बना, मतलब ऐसे लोगों को बुला के इसमें गरीब लोगों को लेकर आके मैंने एक छोटा सा पी के उसको दिया हमारे बिल्डिंग में, बहुत पैसा बहुत बड़ा लोग आएगा, बहुत बड़ा लोग तो गणेश में अपना पाम बेच कर जितना भी भिखारी है उधर ही है, और उसने छोड़ा नेहरू तक गया सब भिखारी को कट लेकर खाना को, मतलब मैं भिखारी को खाना खिला रहा तो उससे भी बड़ा भिखारी वो भी तो वेट कर रहा था थोड़ी देर के पहले, मुझे लगा कुछ बन जाएगा तो मैं भी। So it is not only water conservation, you should save the food. एक टाइम का मैं जब होटल में मैं मिनिमम करता हूँ, पर जब बच जाएगा ना मैं निकल जाता हूँ, और ये वेटर लोग देखते ही हैं, मेरे बुद्धू फ्रेंड है अभी बुद्धू सर नंबर आगे बोलने का जरूरत नहीं, तो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं छोड़ेगा, मैं तो वेटर को बुला के बोलता हूँ चलो पार्टिसिपेट देखो हाँ घर से लेकर आओगे, they don't even waste the salads, बोले क्यों सर पैसा उसका भी डाल। हाँ मुझे तो मैंने भी सीखा, ये मुखवास ही लाया ना, कुछ लोग तो मुखवास भी नहीं छोड़ता, वो आके बाजू पर उठा के पॉकेट में
अच्छा कोई नया है? यो Vagetation paper. हाँ मैं लिख रहा हूँ ये दिस इज माय पॉलिसी दृष्टि बदल ले पूरा डाल और अब ये भी देखते हैं क्या है चलो कुछ देर में हाँ तो उस वर्ष समथिंग आई नेवर परचेज इट माय लाइफ व्हाई होटल में ये खोल रहा है तो थर्ड पॉइंट 90% of the irrigation, right? 90% of the irrigation is fully used. Irrigation water is fully used for agriculture. Before the monsoon only. Before the monsoon only. Next. The biggest reason for water conservation. The biggest reason for water conservation is what? Increasing level of pollutants. Increasing level of pollutants in fresh water. Increasing level of pollution in river water. This topic is completed. Okay, the next topic. Conservation practices. One, right, rainwater harvesting. Then two, watershed management. So what type of water harvesting in the Rainwater. You haven't seen it. फिर क्या बोल रहे हैं मॉडल ये कौन सा मॉडल अब वो दिखा what is it the Mastikpur batch is sitting silent विचार वाले पिछले 2 साल से देख रहे हैं ये बंदा ना ऊपर नीचे है इधर ही लटक रहा है तो पर टी चाय पी के गया अरे बताया नहीं मुझे वॉलपेपर में कैसा लगता है ना स्ट्रगलर ऑफ द लाइफ ये बंदा मतलब क्या हो बोझ का मारा ये बोझ है कौन बोले मम्मी और पापा हाँ इधर see every building every house or a terraces can be ये तो बोर्ड हाँ ये रूफटॉप है ये इंडिया में बहुत कॉमन है ये तो वो है बोरवेल के बाजू में खड़ा तो बुढ़िया क्यों उठ रही है किधर है रे? वो भी रिमूव कर दिया तो मारो मतलब लोग देखते रहता है हाँ ये अलग बहुत शाना बने प्लीज वॉच इट केयरफुली Shaishta. You know all the people of the CBSE?
Majority are French, I think, है ना? Lebanese, कुछ बात है, Lebanon में वो सुनना है ना? अच्छा, Harvesting is the collection and storage of rainwater. Two methods by which rainwater harvest, collection, and storage of rainwater and reservoir. The direct collection of rainwater from rooftops requires gutters, a filter placed above or under the ground, in addition to pipes. When rainwater falls on the rooftop, it gets collected in gutters that channel the water into pipes and then into the storage tanks. Whenever needed, the stored water can be pumped into water outlet pipes ready to be used. Rainwater can also be directly collected using dams, which are built across streets, rivers, or canals to stop or restrict the flow of water, thus forming reservoirs. The second method of rainwater harvesting is the artificial recharge of rainwater to the underground to improve the storage of groundwater. To store water using this method, pits and wells are dug deep into the ground, and rainwater is recharged and injected into underground aquifers through pits and wells. There are several benefits to rainwater harvesting, such as raising the groundwater level, controlling rainwater flow, thus reducing floods and soil erosion, and preventing rainwater pollution. However, the most important benefit is probably meeting water demand in dry seasons. So understood. So look here. Although for you it is something new, rainwater harvesting, but in India we have done it for a long time. In certain countries, not certain countries, certain states, it has been wait. She's looking at them. I'm back. You don't want to. That's a beauty. Doesn't want to. So whenever we are talking about this rainwater harvesting, it is those states which is getting good rainfall can easily go for it. I mean, your own building. Do we have a terrace? Yes. We have to just spend some pipes. All the terrace water has to get collected and try to have a small pit one corner of your building. Instead of that water flowing to the gutters, let that water go deep inside the ground. Every building does it. To be very frank, within this 4 months or 3 months, whichever you get, you might have saved tons and tons, liters and liters of water underground. And the more you are saving the water, the more. And let me tell you, in Kerala, every house where I go generally has at least one well. In fact, kitchen के पीछे ना उनका एक दरवाजा जैसा रहता है. वो well का connection direct वो kitchen में रहता है. And they use well water only to drink. And you know well waters are too good, pure. If you maintain it and need it, हर तीन महीने में उसको clean करना. But then it is very safe for your health. So here when I'm saying methods of conservation, the first one is this. Does Indian cities get good rainfall? ठीक है सर, मिल जाता है. अभी 2 दिन पहले मुंबई को धोड़ा, मतलब क्या rain नहीं धोया एक दिन में, है ना? So we should develop the which method of harvesting? The rainwater method of rain. The next one is watershed. Very simple. That also I'll show you. Wherever we have this water bodies, you might have seen generally a lot of trees are planted. Every dam sites there, every dam site will have a small udyan. That is a Hindi word or a Marathi word, a park. Because dam always have cusecs of water, liters and liters. The rate of evaporation, to reduce it, we need a green belt. Green belt will what it will do? It will reduce the area temperature. And what will be less? So watershed means attract the clouds.
by keeping more and more trees. You feel sorry na kuch bhi ho jao. The birthday you celebrate, keep one thing for. The subject you score highest, keep one. Then you celebrate your mother's, what is that? Anniversary, keep one thing for. Means at least by the time you grow 20 or 30, you might have planted in your own area at least 20 trees. ऐसा नहीं कि आज लगा 3 दिन बाद है ना वो करके लेके पकड़ ली. There are certain associations in Navi Mumbai. आप ऐसा बिल्डिंग उनसे लेके बोलते हैं खुद ही लाते हैं सब कुछ. And वो follow up करने में बोलते हैं. What is follow up? वो grow हो रहा है कि नहीं होता है. उसको क्या problem है. So we are developing what? Both rainwater harvesting as well as watershed. For what? Conservation of water. Clear? So, put that heading. तीनों के पास टेक्स्ट बुक है. तो अभी सर what is water conservation लिख देते हैं. Rainwater harvesting. First student rainwater harvesting. Simple and effective method of water conservation. Bracken is rainwater harvesting. Simple and effective method of is rainwater harvesting. Second, next point, excess rainwater is collected through the network of pipes and underground, pits, not a pits, to replenish, careful with the word, replenish, REPLENISH, renew and recharge the underground storage of water. Now take to page number 122. Now what are the objectives of rainwater harvesting? Or a point stop it. Objectives of rainwater harvesting. Try making only 5 points. Huh? Don't put the phone. Any time, but try to see what to. Yeah?
Yeah. Who's coming? Somebody? Well, I will put the heading need, only need that, because we are there for water harvesting. Watershed development, na? Maybe Surah किधर है? Buddha, be the first person to spread this message. क्यों? आज क्या problem है? हाँ? आज क्या problem है? Watershed development. This hub, where water, with the support of HDFC Bank's Parivartan, mobilized communities from 15 villages to transform their lives. The third is it. They have painted a beautiful painting, yes. Then nowadays, government ना village level पर बहुत बड़ा program और अच्छा चल. क्योंकि हमारे public गलती से ईमानदार बन रहा है. पैसे लेके पॉकेट में रख के सो जाते. And sustainable livelihoods. The three-year resource management. HDFC का ये response रही. पानी पे पड़ गया जमीन में आगे के सरमती उत्पादन The British Valley approach is simple yet novel. It is a natural way of harvesting तो कैसे कटिंग water किया? and helps in recharging the groundwater. Contour flowing. Watershed structures including continuous contour trenches, water absorption trenches, gully plugs, gabion structures, check dams and farm ponds were constructed across the landscape. Starting from the hilltops, trees and grass were planted to check the soil erosion. Check them, sir. बारिश का भरोसा है इसमें अब ये डैम बना तो थोड़ा बहुत पानी से पहले कम सकता अभी क्वार्टर 2-4 क्वार्टर ज्यादा सकता ये डैम बनने के बाद हम सिंचाई कर रहे तभी हमारा उपयोग ज्यादा बस वाटर से पहले धन्यवाद Water सिंचाई, water conservation. At the heart of this transformation is the Village Development Committee, a platform where every voice matters. The community owns the transformation. They plan the program, implement them, and maintain the watershed assets. This is participatory development in action. The Village Development Committee is not just about managing water or land. It's about building a stronger, more resilient community, a community where everyone has a stake in the future. With improved water availability and soil health, farmers are reaping the This program has also worked extensively to diversify income streams and focusing particularly on the landless and women through community-owned initiatives. The impact of these initiatives has been an increase in income generation and enhanced community well-being. जो आगे से हमको वाटर सप्लाई दिया था उसमें हम 1,000 रुपये मिले थे और हमने काम चालू करा मशीन लाया उसमें हल्दी है धनिया पाउडर है मजबूत की समाज में सेवा काम को खाई ऐसे बाहर निकले कभी देखा नहीं The program
promoted kitchen gardens. By growing their own fruits and vegetables, families gain access to fresh, healthy food. Any surplus could be sold for extra income, further empowering families financially. सब्जी लगे तो सर वो सब्जी का हमको फायदा हुआ है 15 या 20 हज़ार का इससे 33 परिवार है वो सभी सर निकाल के यहीं से ले जाते हैं ताकि सभी को The seeds of change are bearing fruit. These 15 villages are witnessing a transformation, not just in their landscape, but in their aspirations. This has led to families wanting to see the future for their children in better education, making use of digital classrooms, and ensuring attendance in school. For children, part of the school. Through their collective efforts, relentless efforts, and with water and HDFC and environmental support, the villagers have enhanced their quality of life, securing water, food, and livelihoods. There is one more video of ये तो बहुत बड़ा program है, बहुत सारी शब्द है. This is watershed. Wherever possible, they'll construct small check dams to. Watershed development is the treatment of the entire catchment area around the village to ensure conservation and regeneration of all its natural resources, especially water. Watershed development must be done from a ridge to valley basis. Right from the top, we dig continuous contour trenches. As you come lower on wastelands, we dig continuous contour binds. On farmlands, we erect farm binds. Along the drainage line of the rivers, right from the top, we do gully plugs. As you come lower down, nala bunds, alien structures, and check dams. The idea is to control soil erosion and to control the flow of gushing water. Water that is running, we try to make it walk. Walking water, we stop. Stopped water, we try to force it underground. The idea is to trap and harvest and store rainwater wherever it flows within the area itself. Since the speed of rainwater is controlled and the soil is not washed away, the rivers do not get flooded or silted. Thus, watershed development is an answer to two problems, that of drought and that of flooding. Earlier efforts of watershed development concentrated merely on water harvesting structures and ignored treating the watershed as a whole. This led to soil erosion and therefore siltation of the structure. While there have been other schemes of poverty alleviation through environmental regeneration, this has been the first large-scale approach where people were not mere beneficiaries, but actual owners and implementers of the project. They helped themselves by regenerating the environment they lived. So you understood what is So chalo read that, let us read and Soja, I want to watch this one. This is the last time I'm showing you any video. Okay. Where are boys for what the boys were doing? Now write the notes for watershed development as well as that. What is that? Huh? Bolo to. Only this girl needs some. Both the boys are always ready to study. Am I correct, boys? Yes. Yes. Very. उसे वीडियो में दोनों बेंच में लेटा हुआ दिखा. हाँ? Very very good. Well, take the topic. Which topic did I stop? Need. Need. So need for water harvesting. Conservation. अरे ये तो बहुत simple chapter है. इसमें क्या बोल रहा है? तो मैं बोल रही थी समाप्त कर. But that is not हो गया.
Stuff that process. 6 Maps of India I am asking. Sir, yes. Right up. India experiences acute shortage. India experiences acute shortage of fresh water, especially. ये क्यों ऐसा मुंह छुपा के उसके ऊपर लिख के get up. Especially during dry season. Can I ask you one thing? In dry season में अगर मैं winter लिखी तो will you accept? नहीं हाँ हाँ क्यों हाँ क्यों भाई? Winter Summer is a dry. dry season everybody knows. Why winter is also dry season? Moisture. Moisture से क्या agriculture होगा? हाँ even winter is a dry season. When you do not get rainfall, all the season are dry now. अभी जैसे एग्जाम आया था डिफरेंस बिटवीन ड्राई फार्मिंग एंड मॉइस्ट फार्मिंग बच्चे ने क्या लिखा फार्मिंग विदाउट वाटर ड्राई फार्मिंग मैंने बोला ये क्या है सर कॉमन सेंस है वाटर सॉरी फार्मिंग विद मिनिमम वाटर इन महाराष्ट्र वी डू हैव लॉट ऑफ दिस राई ना जीरा के भी प्रोडक्शन चलता है सतारा साइड और जीरा को अगर हम लोग क्या बोलते हैं प्लांट को पैडी की तरह भर के पानी देना प्लांट ही निकल जाएगा पानी दे नीड ओनली मिनिमम वाटर Drumstick. हाँ वो तो ट्री है उसका तो छोड़ो सेम क्रॉप्स देन वी हैव रागी बाजरा ज्वारी फॉरन होता है ज्वार नहीं है ज्वार मिलेट्स so there are various crops which requires just maybe like 30 centimeter rainfall will okay. But which crops require maximum? Paddies, paddy, wheat भी okay है. And सबसे ज़्यादा तो sugar cane. हाँ सबसे ज़्यादा उसको static water चाहिए. So when I say this water conservation, you should understand that एक तो हमारा rainfall regular है कि irregular? Irregular. Is it certain or uncertain? That is why we require more irrigation. और हमारा जो irrigation जो डैम है ना वो भी कुछ बड़ा नहीं है. In Maharashtra in Mumbai they have 3 main dams. अगर वो बन जाएगा ना बस साल भर का पानी तो बचे क्या भर गया सर वो पानी को बरसात को करना है ओके ना लेके जब तक खोलने के जब छोड़ बाबा को बोल दे तो मेरे के डायरेक्ट पढ़ने तो तुझे भी स्कूल को जा मैं क्यों तो देखो इंडिया में बहुत टाइम ऐसा हुआ है that first day only it has created too many problems especially in Mumbai flooding and liters and liters of water are inside the house कोल्हापुर साइड सातारा साइड कोल्हापुर महाराष्ट्र में बहुत सारी प्रॉब्लम है सातारा में क्यों कोल्हापुर फुल flood टेम्पल्स का वो सबको अंदर दिख रहा है जेजुरी सुना उधर भी पूरा पानी है जो ये हल्दी उधर लगाए जाते हैं तो वो पूरा हल्दी निकल पानी के मैंने पॉन्ड बनाया लक्ष्मी टेम्पल के मतलब it is just the first day of rainfall and rainfall मोदी जी का बोला कि ये तो सिर्फ हाईलाइट है और पूरा पिक्चर को मैंने तो भाई पूरा पिक्चर नहीं देखी है ना चल सेकंड व्हाट डिड आई से dry season so bracket में लिखो summer and winter next the main reasons are one rainfall in India is irregular and uncertain. Next. Over utilization of water, over exploitation. Next.
commercialization of agriculture. You know what is commercialization of agriculture? Business के लिए use होता है. Next, use of hybrid seeds. Hybrid seeds को ज़्यादा पानी चाहिए. Next, acute shortage of underground water. Okay, you just read that. ये हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है. रिचार्जिंग भी रीड कर लो. ऑप्शन पर क्या उसका टाइप नहीं. अगर वो एग्जीक्यूट में आया था then you will go into irrigation. ये मुझे वाटर से डेवलपमेंट देना है. इन्होंने आलोक क्यों दिया है ना प्रोटोकॉल्स. वाटर से डेवलपमेंट नहीं. सर ये सब नहीं ना वाटर मैकेनिक्स प्लांट्स नहीं ये मस्त. इतना डिटेल में बहुत छोटा चैप्टर है. बोरिंग ऑफ वाटर for direct use भी नहीं. यूज कर रीड कर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर स्टेट. तब इसके अंदर क्या क्या था वो भी लिख लो. Rain for irrigation. हाँ वो तो मैं अभी करूँगा. इरिगेशन के पहले जो भी है प्लीज रीड इट. The means of irrigation. मीन्स नहीं उसका टाइप्स कुछ है वो मैं दे रहा हूँ. इरिगेशन की तो करता Ordinance and methods. हाँ. एक मिनट चलिए आगे देखिए. देख लो फिर बोलो टाइम देख रहे हैं. Only this is left. Are you reading really? ये देखो gets books for reading. School reopening is Second. because once in class morning नहीं है ना. So कितने okay. yes Yeah. तो जाना पड़ेगा ना स्कूल. हाँ but 1 to 4 तक नहीं जाएगी. इधर 31st is the morning lecture done. I'm trying to fly the way. It is special America. Shall we write watershed development? Shrestha. Parishta. Got your name. Write down watershed development. बहुत short देखो. ये सब आपने practically push किया था. Development. ये देखे कट किया ना. ऐसे नहीं कि मेरे प्रधान जी. Now we have ICSE and CBSE has done so much reduction in the this one. सिर्फ टेक्स्ट बुक का पहला और लास्ट पेज चलेगा फिर. what can happen
पुलिस का चैप्टर कौन है? I will do more than. Then you will get out of 80 only 8 marks. चलेगा? और है चार पेपर और उसमें 80 मार्क्स कैसे बनेंगे? और क्या उनको जाके बोल रहे देखिए याद करने के लिए छोड़ो स्कूल्स में रहता है एक्टिविटी अच्छा सब करने ये सब हो वाइट पीएनएस के लिए हमको करना था क्या टॉयलेट स्कूल में ना वही क्लासरूम उसके बाद हमको उधर के रहते रूम्स मैंने कहा तो एक पेपर रख लेने का वही डालने का अरे इधर ड्यूरिंग आवर स्कूल इज रेड क्रॉस सोसाइटी का वो रहता है वो ठीक है मनी के प्रॉब्लम में तो सब्जी वाला क्या तो बंदर वाला किसी ने नहीं छोड़ा पड़ी चल निकल के जा ये वो और हमारा प्रिंसिपल ने क्या बोला जो सबसे ज्यादा कलेक्ट करेगा उसको मेडल मिलेगा कुछ नहीं मैंने बोला उसमें साथ पैसा बहुत ठीक चलो वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं we have given to principal and principal will give to the Red Cross society फिर पैसे के कलेक्ट करके तुम दोनों क्या पार्टी करेंगे सर हाँ बस बस यहाँ से पॉलिटिशियन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया refers to a geographical area watershed management or watershed development a geographical area that drains to a common point that drains to a common point making it an ideal unit for both soil and water. Ideal unit for both soil and water. Put that word soil and water. Second point. Under this program, efficient management and conservation of surface का opposite क्या आएगा अंडरग्राउंड दोनों बचाना पड़ेगा इस सरफेस तो चलो फिर भी ठीक है हाउ डू यू सेव अंडरग्राउंड वाटर reduce save तुम कैसे करेंगे nowadays have you seen this borewell का जो पानी वो एक्सेस जाता है ना उधर एक ऐसा एक सर्कुलर गड्ढा बनाया रहेगा and stones are teaching to किया ना and जो एक्सेस पानी आप लोग आप पंप करके जाते हैं वो पानी उधर ही जाता है ये हमारे महाराष्ट्र में देखा मैं उधर कपड़ा लता जो लिखे उधर निकालते घर में नहीं करे सब कुछ काम उधर ही हो कोयला डैम पे उधर जो साइड में वाटर उधर तो उधर सारे लेडीज कपड़ा लाके तो वो तो फिर मैक्सिमम सर इसके लिए हम लोग उधर ही जाते हैं सर कुछ लाइन और उधर दूसरे साइड में क्लाउड्स एंड होटल और अब काम में साइड में बच्चे बच्चे है ना मान के सबसे वाटर टैंक खोल दिया लोग ने बट कोई ना ट्रांजिशन साथा ना यू आर इन साथा वे मैं भी 2-3 बार गया जैसा सब मैंने देखा बहुत अच्छे डेवलप किया है तो देखो जब अंडरग्राउंड वाटर का बात आता है ना दिस इज दैट वाटर व्हिच यू एंड मी कैन यूज इट ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्राई सीजन बट आजकल बोरवेल एंड व्हाट इज दैट ट्यूबवेल्स आर सो पॉपुलर ये साउथ में हमारे एरिया में मेरा जो अलग से मैंने घर बनाया है
I've gone deep down to 220 feet. अच्छा पानी है तुम्हारे नेबर कितना फीट का डाला तो मैंने मैनेजर को बोला कि मत बता वरना वो उससे भी डीप हो बस 2 दिन के बाद उसका बोरवेल स्टार्ट उसने 350 फीट डाला and then every feet man you have to pay money. I remember close to 1 lakh I paid for that. Now वो machine आता है लोग आते हैं कुछ आपने बार्गेनिंग की कैसे हर जगह बार्गेनिंग करेगा तो पता बॉम्बे से आया गरीब गलत क्योंकि हमारे यहाँ पे सब सिंगापुर पार्टीज है सब तो मतलब हम भी देख रहा ठीक है ना हो जाएगा और मैं एकदम 5,000 की और सब पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ If everyone is going deep, what will happen to the underground water? My dad, when he said, hardly 50 feet में पानी आता था, वे 50 feet में से भाव आता बस मैंने बोला और नीचे जा और नीचे जा साहब और कितना नीचे जाएगा ऑलरेडी मैं दूसरी जगह पर निकल गया and that machines if you have seen एक पाइप अटैच करना है और ड्रिल करते हैं और पाइप ड्रिल करेगा और वो प्लास्टिक का एक रहता है वो डाल के उसमें दबा के और हो गया पानी ऑलरेडी तमिलनाडु does have too good rainfall वेल तो हमारे यहाँ पे कूद के कोई मरना चाहेगा तो भी नहीं मरेगा बोले क्यों वेल तो सूखा पड़ा है सब और मैडम ने हट जाओ मुझे मरना है सब लोग नहीं तो ठीक है अरे कोई तो बचाओ सीधा कूदा और नीचे तो अरे ऊपर कोई है क्या अरे क्या हो गया अंदर सूखा है मैं पिछले 4 साल से मैं बोलूंगा तो एक एकदम ड्रामेटिक करके जाके कूद रही फिर जो मैं और एक टेक्निक करेगी मतलब जो भी करने का पहले ऊपर फिर ऊपर करेगी so here in India na this tube wells have become a fashion not a fashion it is a need तो गवर्नमेंट क्या करता है तमिलनाडु the first government which made this rainwater harvesting compulsory मैंने बोला अरे रेन ही आता नहीं है कंपल्सरी क्या करेगा ऊपर से मेरा बड़ा पड़ोसर क्या करता है टैंक को ओपन कर देता है भैया पानी ऐसा ये अपने घर के टैंक अच्छा तो बरसात हो रहा है कैसे आपके मेरे घर के लिए हो रहा है और बाकी घर सब सूखा बैठा तो every house has this rainwater harvesting compulsory इनफैक्ट उसको डिगिंग करने के लिए गवर्नमेंट पैसे देता है और हमारे कजन लोग उसको गाय भैंस खरीदते हैं और किधर खुदा है ना छोटा सा खुद ही खोद के रख देता है और गवर्नमेंट होता है उसके लिए गाय कितने बच्चे गए तो ठीक है मैंने तरीका गवर्नमेंट ऑफिसर भी निकलते means we have to be very careful for what watershed management. Now with that, I think that is a Maharashtra village only. Wherever possible, they will store the water and allow the water to go underground. क्योंकि क्या नहीं होगा evaporation नहीं है ना चलो let's finish this answer. Watershed management. Okay, efficient management and conservation of it. Third point. The slogan of water body in India. ये कुछ नया है. The slogan of the slogan of water management body in India. Let me see if anybody explaining me. ALSH water. पानी को ALSH कैसे? Dance with Oh, you understood that. मतलब ALSH water and percolate water. ये उनका slogan है. Which simply means reduce the speedy runoff and allow the water to seep. You know what is seeping? Going underground and allow the water to seep under. That's all. चलो अभी एक आंसर खुद ही लिखो टाइम हो जाता है इरिगेशन का मीनिंग लिखो फिर उसका रीजंस लिखो व्हाई आर वी गोइंग फॉर पॉइंट नंबर 4 5 में एक्सप्लेन करो पहले इरिगेशन का मीनिंग लिखो देते हैं
Let us make one points to read. So if you want to write irrigation in one line, how will you write? Irrigation. Line. What is irrigation? So it is a scientific network of supplying water to the fields. How are we supplying? Through dams and canals. If I want to show you canals in a very simple way, if this is the river which is flowing, okay, we construct a huge wall. And ये जो part है dam का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Reservoir, right? Understanding what you are seeing, and these are the gates. Which gates I call it? Flood gates. You right? So इसको open रखेगा हम flood gate. And then from certain sites we dug canals. You know what are canals? Cemented gutters. And this will take water to long distances. Dam जैसे इसने बोला कोयना में है ना, but the water it will be getting might be miles and miles away. So how do we connect dam with the village? By constructing a canal. Have you know how the dam is constructed? How you see? River to Robna, it is not an ordinary path. You look at this. क्या नीचे पानी जैसे जब तक बैठा रहेगा, अच्छा डैम बना रहा है तो हमारा दिमाग में ना बहुत we should not be born in India, but Africa चले जाए, है ना? Sure. Yeah, Africa is very rich. But they don't like the white people. अरे उतने भी फिर अपने लास्ट वीक एक आया था मेरा दोस्त का बिजनेस पार्टनर टांजानिया, तो my brother बोला उनका इंग्लिश में इतना ये है ना, ईस्ट अफ्रीकन टांजानिया, world's largest dam you should see. It is in China. हाँ, how do you ये मैंने दिखाया फिर वो दिखाया आपको? नहीं, जोर मत ये दोनों है ना बार बार एक ही देखते रहते हैं और बोलते नहीं सर नहीं दिखाया ये देखा सर, but how do you know it is in China? look charts. Through तुम न्यूज़ मुझे एक बार भी मत दो, ये है every time I'm sharing the video, but nobody is there in our side. But ठीक है यार, it gets recorded ना. So next time you see a recording, only are one of the ways we control and engineer nature. We use very different control flooding and generate electricity. Look, This is the world's Paani ka example. Record this name. It was built, it flooded a total area of more than 156,000 acres of land with 42 billion tons of water. The sheer amount of the water was enough to alter the earth reach by an estimated 0.065%. So in spite of their extraordinary size and capacity, how are dams built? Dams are usually built between a water source such as a river and a valley. The valley is later converted into a reservoir or an artificial lake using either water redirected from its natural source or elsewhere. Using tunnels along the side of the dam or its foundations. During the construction of these channels, oil is excavated and larger rocks are plastically exposed to clear the down to the water. For dams built across large flowing rivers, simply constructing channels to divert the water supply won't be enough. Instead, dams hoping to divert large rivers utilize dry construction pits built on one side of the river. The dam construction then proceeds in stages where water
water is allowed to pass through openings in completed portions of the dam. The reservoir can then be filled. Dams are either built on soil or rock foundations, depending on the type of dam and how much water it is intended to support. Foundation must be rigid and strong enough to support both the weight of the dam itself and withstand the water pressure exerted on it. Since foundations are built below the ground, pockets of soft soil or rock sometimes found during construction. They're replaced right away with stronger materials to ensure the dam's foundations are as sturdy as possible. Then any fissures or cracks are filled up right away with grout to prevent water leaking onto the dam's located. Going on to building the dam itself, you might be wondering where all the Did you watch it? That water which the river is flowing, it has to be diverted first. तो क्या करेंगे जो अनसाइडेड साइड है ना उसको ब्लास्ट करके उसको दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होने दे. And to make a river to flow in different direction, नाला तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्ट जब में कर लेते. And ये जो dam construction might go for years. And once dam construction is done, now they'll show you. They try to obstruct that flow of the river. And again the water has to be उसका natural channel तो यही है. तो अभी dam construction का फायदा भी है नुकसान भी ज्यादा है. In fact, many dams in India construct किया flood control करने के लिए और construct होने के बाद वो और flood देगा. Like we have dam in Bihar, maybe Kosi, महानदी. महानदी तो हर साल ओडिशा को बोलते चलो मेरे साथ भी चलो. हाँ, वो people there. And even Rajasthan, Indira Gandhi canal they have. Rajasthan people say क्या सकते हैं सर अरे उधर rainfall is too good and you get a lot of good crops in Rajasthan. Only western part of Rajasthan is there. And which is the longest dam? We have Hirakud, Damodar Valley, and a Bhakranangal Dam. And Maharashtra में भी है कोयना Dam, Jaikwadi project, and a Periyar project in Tamil Nadu. So many dams are there, but still water conservation is the problem. Why? हमारा agriculture तो उतना developed है. And we use a lot of water for agriculture. Okay, so देख लो, you get a challenge. For most dam construction projects, concrete matching plants are built on site. This gives workers access to large quantities of ready clay using either a system of conveyor belt or via trucks and cranes. This concrete is then poured into a mold made in the required shape of the dam. It's built up in layers 3 to 6 feet high. After the dam is built, it's reservoir and then be properly filled up. It can take several years for the process to happen either naturally or with the help of pumping units. At this point, the water level behind the dam must not be at operational levels. The dam has to be tested first. Once construction is complete, engineers use the first film as an opportunity to test the dam and see if it will hold. They closely monitor the film to look for any deficiencies in the dam's design or construction and safely address them. Inspectors check for signs of leaking, cracking, or erosion. Repairs can be made to get the dam performing to the intended capacity. Dams are split into 2 categories, low hazard and high hazard. This refers to the amount of damage it would inflict on its immediate surroundings if the dam fails. Dams also feature components specifically designed for safety, such as emergency spillways during extreme events, including excessive rainfall or snowmelt. Massive volumes of water spill through and are diverted downstream in a controlled flow, ensuring that the main dam structure does not need to withstand the additional water pressure. Dams need to stand the test of time, so they're never truly finished. Changing water levels around the world, the operational conditions of these measures over time. Prolonged droughts can significantly reduce water levels in the reservoir behind the Okay, it comes out 5 point है ना उसमें कितना point है? 5 or 6. अरे irrigation का
Copy down that heading quickly. Then you can go for your lovely break. Oh, enough. You only. Write down all the points. What is the heading? Reasons or what is the heading? Heading क्या? तू बोल क्या? नहीं heading क्या है? Reasons for construction है ना? फिर Sir, ये that irrigation के बाद construction principle. This is because of the following reasons. So enjoy your break. Like a pan patch back. You go. Sure. सोना तो अभी खाना बाद में
only Recording is away. they said that it takes a class. After this, I will give the notes. So there go. If you don't want to write down, there is small condition. I will ask certain things from the So opinion. we are guys. Really? And मेरा handwriting. आप लोग आंसर बोल सकते हैं ना, आप लोग दोनों मत सकते हैं, ये अकेले Thank you very much. है, you have to answer my question है ना, हाँ. ये लिख दो बच्चा, अगर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो लोग दोनों आंसर देगा, they will not fight, only she will, and then you have to answer, वो तो आंसर देने का ऊपर है, since 2 years I am taking you for the lectures, we were the same. Please. The first question. So, Shrestha. Parinishta. Oh, well, I forget the names. ये पूरा natural vegetation, water resources is a separate chapter. Separate 10 marks. Wait for some time, I'll tell you. आपको स्कूल में नहीं दिया है the syllabus? Which should have given it to you. I'll give you a detailed paper pattern, maps, okay, and थोड़ा सा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूरा आ जाता है, हमको बोर्ड से ही मिलता है ना. Complete that points. If while writing also you get a doubt, please ask me, yeah. Because I marked little bit points. तो अगर मेरे से पूछो तो मैं बहुत दो लाइन में दे देता हूँ. All because of Paramish. You are a good person in me, so. Go with them. What is the meaning of this statement which will join the way? Balaji Sigma Palayan. Balaji movie clips. Yeah, which can not so on, नहीं सब बना भी movie plus. That's a good example. Say, hey, पहले तो PMC reading. Okay, but PBS list. वो on each. PBR पे को लगा अंदर से पीछे गेट को.
मिनट तो मैं मुझे नहीं मालूम आई स्टेप लाइक पूरा होल्डिंग एक्शन इज लेस स्टेप यस finished it So far, so what is it? और आता है ये एग्जाम मतलब तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करता ना So yeah, आपको देखा है India's three provinces. Kharif, Rabi and Zaid. Which anchored for the नहीं उन्होंने सर बोला है but they didn't put it in the points ना Zaid नहीं है Zaid is a very short season no need for writing for Kharif, Rabi only we require a lot of water getting it yes or no Yes. yes run the answer I don't know about the teacher way listen don't write person put your pens cool thank you very much जो भी है तो देखो I think these guys are attending my lecture since last year. So anytime you send my lecture to be a headache for you. Sure. Bank of India. कौन सा? Bank of India. हाँ but वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना. अभी सर नहीं समझता तो बोलो इधर कोऑर्डिनेटर को बोलो. ये तुमको लगता है कि लोग दोनों से बाथरूम के लिए जरूर जाते हैं फिजिकली के लिए ठीक है ना नहीं तो बट क्या है ना अभी उन्होंने स्टार्ट किया है ना स्टार्ट हुआ बस 3 मैच हुआ सारे लोग सुबह 10 पर सबसे हाँ देखो तो वो 3 मैच लास्ट टाइम ट्रेनिंग एक make it this now you tell me that one thing you didn't understand maps of India she is absent then how will I so exam उसके लिए extra lecture लगा लो ना extra lecture कैसा होता है you know now तो book कर लो and one more thing because this year as compared to last year now the portions are in a far better position every subject especially geography तो geography में देखो ये टाइम पे अगर मैं इधर चल रहा हूँ और एक डेढ़ महीने में I will wind up then you have a lot of time for your what do you call it so revision and that is the time I can come for this what is that topo या वो भी बोलो है ना अभी wait अभी for this school exam में you have to somehow school exam में है क्या topo टोपो है टोपो नहीं अभी है क्या school exam में तभी है तभी है मैं अब जुलाई में क्या डेट है फर्स्ट वीक ऑफ डेट अभी फिक्स नहीं क्यों नहीं हुआ बट जुलाई बोला है ना ठीक है अब फिर वरना ऐसा कर सकते हैं हम लोग अभी काम करो बिफोर दिस जून फर्स्ट और सेकेंड वीक you just put this one the request that you need your lecture and fun all three of you तो देखो ये तो बेचारा नहीं था तो इसको तो चाहिए and you can mention the name of the teacher if you prefer understanding you know
Then they will check the timing of me and then I will come accordingly what which start of the rules. Understanding? It's a no fair. I know one exams are a little bit sooner, but after exam का कितना रहेगा? It is exam or test? एग्जाम है मैं 40 मार्क्स कर रही हूँ Unit test. यूनिट Test है. Unit test. हाँ यूनिट टेस्ट And how many chapters are there beside Coco? What are they? Climate तो रहेगा. Next time. First, देखो climate I have taught you. Yes. maps contours salient direction map reading and interpretation location extent and climate तो आगे उसमें. Climate I have taught you. Did you practice the numericals? Everyone. ये तो आधा जुड़ा. And then soil is not a challenge. Soil I have completed. Is it? The only challenge is our total. तो वो हो जाएगा I hope okay 40 months you can say that documents. this Okay. one 10 marks by. 10 months का है. और बाकी सब 30 months का है. So you talk to, if you want, I'll tell her right now that she wants a total lecture separate. July है ना exam. चलो. मुझे June last week में याद था मैं खुद ही बोलूँगा. I will really keep it. Okay. चलो. Did you write? I'll give you the book. Let us go with the next one. Now write the next again. अभी ये means of irrigation लिखो इसमें notes कम रहेगा and in fact I will show you the videos later है ना write down means of irrigation wells tube wells है ना ये है क्या means of irrigation लिखो नहीं है importance and methods ही be better नहीं this methods of irrigation ही है ना importance of irrigation ले जाइए हाँ वही जो आपने लिखा ठीक है then you write methods of irrigation now if I say wells what is the advantage of a well throughout the year correct what is the disadvantage you can go for crops cultivation no can we go for vegetables yes but wells are one good source which can give water throughout the year और क्या इसका एडवांटेज है cheap है ना इंडिविजुअल लेवल पर आप कुआं खोद सकते हैं यस और क्या है दिस इजी मेंटेनेंस है ना इसके लिए कुछ बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है नहीं ना Civilians को भी 200 300 depth wells में depth what 200 300 what meters yeah वो तो बहुत dangerous हो जाएगा then we say what is that wells हो गया then we have tube wells what are tube wells here is initially costly है ना all over the well हाँ but then once you go for tube wells it can give water supply for long duration of time ये काफी deep है ना and it is as compared to wells this is a more reliable source of water what is the meaning of a reliable we can depend on disadvantage क्या है sir once the underground water becomes dry then you can't do anything to the table well का हम लोग deepening करता है I don't know what you call in Marathi पानी अगर कम हो रहा है ना they go and they keep digging little bit और deep जाता है but ट्यूबवेल का कुछ नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते एक्स्ट्रा ट्यूब फिर ऊपर से डालेगा एक बार ड्राई हो गया it is done and it requires what requires electricity है ना क्यों और मोटर किससे चलता आजकल तो ऐसा है कि हम लोग वेल्स में भी मोटर्स डाल के ही लेते हैं वी कांट लिव द वाटर एंड वो पुराना मराठी गाना की तरह गा गा के फिर अगर तो निकल पड़ी है ना बट कंस्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ मस्ट आपको पानी ज्यादा चाहिए तो यू आर यूजिंग
So likewise, we are going to do everything. So sorry, you read, we will mark. इसमें कुछ लिखना ही नहीं. हाँ, you read it. The other two people will mark. You also interpret that. Means of irrigation. Based on the availability of surface water, rivers and streams and groundwater, relief, soils and climatic conditions, different means of irrigation are utilized. For example, in the crystalline soil areas of different देखो जैसा soil है, जैसा depth है, वैसा we will use the irrigation. अभी dry areas में जाके तो well खुदेगा. Sir, I am the best comedian of the well. है ना? चल. tanks form the major source of irrigation, whereas the alluvial tracts of Gangetic and Which tanks are we talking about? Natural tanks. In fact, India में सबसे ज़्यादा tanks in South India state में है. Telangana. Because it has lot of crevices in the surface. So when there is rain, there is lot of water seeping in. You know, actually Hyderabad and Andhra Pradesh is our twin city. एक हैदराबाद है, एक तेलंगाना, but दोनों आंध्र प्रदेश का ही है. But Telangana is having a separate MPs, MLAs, and Hyderabad is having separate. Go ahead. and coastal plains are best suited for canals and well irrigation. The conventional means of irrigation. Conventional means. The conventional means of irrigation include well, tanks, and inundation canals. Inundation. Inundation canals. Irrigation is usually done manually, where a farmer himself pulls out water from wells, tanks, and canals, or uses animals. So this is very manually we are doing. What is the word manually means? Sir, वो तो खुद ही वो water भी लगाता है ये कर देता है. But if I want to do something else, what is that something else? The modern. Tube well है या bore well है. I need money. I need machines. And bore well तो चला हाथ से भी मारता है. मैंने खुद भी किया है वो सर. But tube well में तो nothing. It is only electricity. Go ahead. The modern means of irrigation include tube wells, perennial canals, deep drip irrigation, etc. Wells. A well is a small hole dug in the surface of the earth to obtain water from the water table for irrigation and other. Okay. Wells are usually of two types: lined wells and unlined wells. What are lined wells? So when we have a well which is to the ground level. तो मैंने सीखा है. वो अभी मैंने व्हाट्सएप पर इसको पूरा मैप सब सेट कर दूँ. आपका कोई कनेक्शन नहीं है कोई अदर ब्रांच में. और इसका तो रहेगा. Your friends in any other branch from same school. I have example of what was maths or science. Okay, so it's okay. On the lesson. और कौन है जो मेरे सब्जेक्ट में दिया है? हाँ, ICSE पढ़ा है सर. तो CBSE You are in which school? Bodha है ना? How many divisions are there? 10. You are in which direction? D. There are lines and creating gap. D. D division, है ना? She's counting. Equal gap. But 9 से जो 10 में जाता वही division होगा ना? नीचे कर. Go ahead. Lined wells are man-made. They are artificially. They are man-made. They are artificially constructed by digging into the ground and supporting the walls with bricks in a circular pattern. Okay, circular pattern. ये आके lined wells. हम लोग को bricks लगा के जो mound बोलते हैं ना? Where you can stand and you can see. Kerala side में they don't have the money. Money क्या लोग देख ही नहीं करते. जो बोला वही पहले. बहुत सारा बच्चा पानी especially heavy rain का टाइम ना अंदर घुसता है. And they die. लोग उसका मतलब walking and they just क्योंकि वो ना wall रहता है ना कुछ रहता है वो सिर्फ earth के साथ ही रहता है. And it is dangerous. तो मेरे एक तो कजिन को बोला लकड़ी लेके जाओ. इधर लास्ट में जाओ कैसे जाएगा.
Rains in Kerala, you should stay there for some time. ये मुंबई का परिसर तो कुछ भी नहीं. And sorry to say, मेरा cousin इधर से दूसरा के जाने के लिए ऐसा वाला रास्ता है, बहुत वाला नहीं. हाँ, बोले चेका सब के जाने, बिल्कुल है, क्या हो गया, कंसर्न में बहुत छोटा है. नहीं कभी कभी साफ आएगा तो कभी मतलब क्या है, ये कोबरा से ना बहुत खुलता है. अब उस दिन से रात शाम को 6 बजे के उसके घर जाके ही बनते हैं. हमें कहते क्या, कोबरास for you and me is something Delhi. For them they just bullet and okay. तो क्या किया था कुछ नहीं हुआ हमेशा. तो हम तो जिंदगी उनके चलती जाके कोबरा है ना. In fact, that king cobra, if you have heard, is mainly found in Kerala only. मुझे क्या चल रहा है, स्नेक से आप डरता है, ऐसा डरता है कुछ नहीं. बट हमारे एरिया में स्नेक्स नहीं आता ना दोस्त, तो इधर सीख लेने का. हाँ सीख लेंगे, बट नॉन रेगुलर. अभी मेरा जो घर है उधर है. इनफैक्ट देयर इज वन स्नेक, मेरा पापा का टाइम था. पापा विल नॉट आस्क अस टू इवन बीट इट. अरे ये क्यों से बात करता है, अरे कभी आया, अरे तू जाते कि उस हाँ बिकॉज़ उनका मम्मी का टाइम तो एक कपल ही होता है. काम they got some time to they worship. And कोबरा that also वही जगह पर है. और हम लोग तो बहुत ट्राई किए इसको रोकने के लिए, पापा ने कहा रोक. It comes stay there for 1 or 2 days, then they can be done. And we have seen that the skin also. अच्छा तुषार भी था ना, मैं भी था. अभी तो अरे आप लोग मारते हैं ना, तुम भी मारा है, बट पापा बोलेंगे वो नहीं छोड़. बाकी डिफरेंट टाइप्स आता है, उसको तो बोलेंगे यार चल स्टार्ट हो गया. कि बहुत सारा वो लगा है अकेले का तरह वो. डोंट लाइक इट. पापा बोलते छोटा है तुझे मालूम है कि कितना मैं क्या करता पानी को छोड़ता रहता है. और हमारे घर में दो जगह पर मोटर रहती है. Go ahead. Unlined wells are formed by different natural phenomena and are normally not protected by the lining of the road. Underline word, not protected. इसको अनलाइन बोलते हैं. इनफैक्ट जब दो को मान करेंगे ना, they will ask you what is man made and what is natural figure. इधर से सिखाते हैं. Man made is lined or unlined? Line. What is natural well? Unlined. Well irrigation is a cheap, simple and dependable source of irrigation. It is practiced in Underline cheap and dependable. It is practiced in areas where plenty of groundwater is available and the depth of the water table does not exceed 15. Underline 50 meters. उससे ज़्यादा नहीं था. Area. Well irrigation is confined mainly to the alluvial plains where owing to the soft nature to the soft nature of the soil, wells can be easily dug and the yield of the crops from the land after irrigation is considerably high. Wells are dug in the middle of the area to be irrigated and at a place which is relatively at a high level. The presence of perennial rivers ensure the water table is recharged. The areas where the well irrigation is practiced include Punjab, Uttar Pradesh, Goa, Haryana. Wait, इतना पढ़ने की जरूरत है. Put all that in bracket. सब bracket में डालो. The water from the wells is lifted for irrigation in a number of ways. Persian wheel method. You know what is the Persian wheel? Have you seen in Marathi movie the वो तो bucket system. Look at, whenever we explain Persian wheel, let me make it a line well or an unlined well. Line. Unlined well में Persian wheel बैठाएंगे, है ना? ये diagram है. Okay, और ये mouth है उसका. What they will do, अभी ये इधर एक flow system है. एक बड़ा सा wheel रहता है. जो attach करते हैं, wheel will have, are you seeing outside of the wheel? And इसका दो नोट रहते हैं. ये इधर fix रहता है, दो लकड़ी से रखते हैं. And this is fixed to bull, and the bull will
coolant. When it pulls it, this wheel will rotate. Are you understanding? When it goes inside the water, inside the well, what will happen? The bucket will be filled, it will come up. And by the time it comes here, the water drops. Okay, yes, it's a common. Visual media, why don't you? You have not seen Marathi movies any? आप लोग ये मराठी मूवी देखते ही नहीं यार आपका मदर टंग अच्छा नहीं करते ना आजकल तो ये तो फालतू डबल मीनिंग का कुछ भी बना के है ना व्हाट इज दैट मूवी है इट्स fancy है नहीं रही सही चीज है हाँ दिस इज क्वेश्चन की नहीं याद ही नहीं आएगा आपको दिख रहा हाँ क्या करते हैं ये पंजाब का दिख रहा है मतलब अभी भी है एट सम इंडिविजुअल लेवल दे आर डूइंग इट यू शुड The questions no maybe. What is it? Questions. Question meaning method वो questions ले रहा था. Idea follow किए तो why should I asking doubts? And iron buckets. See. मैंने सालों से क्वेश्चन नहीं मुझे याद नहीं वीडियो में भी दिख रहा है attached है Tell us this and you see ये पानी डाल रहा हूँ पानी जा रहा है very cheap okay but sympathy for the whole sinner जिंदगी में कितना चक्कर खा रहा है राउंड और डोली बताइए पानी लिक्विड बट इज आल्सो नॉट वेस्ट तो आन भी हम filling airing and water बराबर से ये सब हम पर्सनली जाके देखना होता है I have never been to fields मेरे एरिया में चलता है बट मैं भी आपको वो सब एक साथ दिख जाएगा मेरा जो पापा का
ये उसका मैंने पापा से प्रॉमिस किया एक बार करूँगा, बट मुझे पता नहीं। Modern irrigation. We have Or different. since my grandpa was in Singapore, when my dad was very young, जो भी मेरा खेत था ये लोगों से हड़प लिया। और मेरे पापा ने बोला चलो आपको एक Irrigation. हमारा खुद का है, Let us learn. जैसे लेंगे What like one? प्रदेश के Irrigation. Water is allowed to enter the fields through channels or furrows that are made between two rows of crops such as tomatoes, leafy vegetables. ये देखो, this is how the modern methods of irrigation, ये फरो बोलते हैं। Irrigation. Basic irrigation. ये क्या होगा? A basin is formed by surrounding a flat piece of land with no walls made of mud. It is then flooded with water so that the roots of the crops are submerged in the water. Paddy, for example, grows best when its roots are completely underwater. Sprinkler irrigation. This is The water sprinkler is seed, dispersed through फरो irrigation sprinkler, फरो मतलब वो सिर्फ मिट्टी को दोनों साइड से लेफ्ट राइट वो फरो पहला वाला। Hey guys, listen, what is furrow? देखो, what is furrow? With the use of this, are you seeing? I can divert the water. अगर इधर बंद किया ना वो दूसरी जगह जाए। अगर ये करना है तो मैं ये ब्लॉक करेगा, फिर only इधर जाए। It is not very costly method. And these, क्या बोलते हैं, in Kerala and South also, what I have seen, they just dug it and put it on one side. Only that is the one. For you and me, it is a very technical thing. वो उनके लिए तो very common है। वो बांधता है, जाता है, फटाफट करके बाहर। तो ये कैसे करता है? मतलब इसके लिए ट्रेनिंग मिलता है, तू आ जाता है, मतलब दूसरा काम नहीं है। Look, how is he doing? this method of Guys, blocking that side. देखा? basic irrigation. This is A basic. basin is formed by surrounding a flat piece of land with no walls made of ये very common. महाराष्ट्र में भी flooded with water, so that the roots of the crops are एक ही basin. submerged in the water. Paddy, for example, grows best when its roots are completely underwater. Sprinkler irrigation. The water is dispersed through sprinklers, which have connected pipes with rotating nozzles. देखो, pipes are down. The pipes are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is pumped through the main pipe, under pressure, it escapes out from the rotating nozzles in the form of rain. Drip irrigation. In this type of irrigation, the water is made to trickle or fall down drop by drop near the roots of the plants. This method ensures community homes. ये जो pipe ऊपर से आए, ये मेरे साथ वो है sugar free Alright, study delivery, मैं आपको irrigation method explain करूँगा। मैं explain different irrigation methods जो कि irrigation अपनी field में use होते हैं, ठीक है, अलग-अलग condition के according, ठीक है। एग्जाम ऐसे ही पूछे। मैं explain करूँगा सारे points, okay, ये पर आप पता कर मैं एक काम करो। explain करूँगा। जैसे surface irrigation, drip irrigation, ये अपने पास इतना डिटेल में नहीं है। okay, but flooding irrigation, furrow. Modern irrigation. I'll show you something new, huh? ये देखो, irrigation tradition. ये भी एक video. Traditional method, modern method. Why do plants need water? The same reason for which humans need water. Water constitutes a major part of the plant body. This water helps plants to transport the nutrients in their body and is quite important for the growth of the plant. How do plants get their water? The roots help the plant to absorb the water in the soil. It indicates that moist soil would need a continuous supply of water to the plant. Do you know that the plants need water right from their germ begin? Have you ever read after sowing, keep the water to germinate, and that's precisely why farmers sow seeds for the rain. Hello guys, we are here with a crucial topic, types of irrigation. Proper irrigation is the soul of agriculture. For getting a healthy crop, farmers have to irrigate their land in the right food.
Here we give you complete information about different types of irrigation systems. Hi friends, welcome to the Discover Agriculture YouTube channel. If you are not yet subscribed to our channel, please subscribe now. There are two different types of irrigation systems for agriculture as follows. That is traditional method and modern method. Now, we are explaining these two methods deeply for your understanding. Have a look. 1. Traditional irrigation. If you consider only India, data shows that over half of the labor force is occupied with different types of farming. India is one of the main exporters of oats, dry fruits, and natural grain products. India has regularly confronted obstacles such as low harvest yield, unfavorable harvests, rainstorms, and other benefits. Traditional approaches to irrigation have overcome the majority of these issues. These old irrigation strategies are not yet outdated. India's farmers utilize these techniques to guarantee appropriate seed germination, a better yield of harvest, and speedy development of food crops. Traditional irrigation is known as organic farming irrigation. There are 4 types of traditional irrigation systems, which are as follows. 1. Check basin method. This strategy is an irrigation system type that relies upon water accessibility. The cultivating land is separated into various sectors associated with a small drain. Water is stored at the highest place on the land. From that point, these channels start. This type of traditional irrigation has been around for a long time. 2. Strip irrigation method. The farming land is separated into various strips. Such strips are isolated by name. The length of each strip relies on the land's point of slope to a rainfall supply. Such a technique requires minimal labor and investment. 3. Furrow irrigation. Whenever crops are filled in columns, furrow irrigation proves to be useful. It is expected to be used in cultivation. This type can prompt better irrigation of bigger pieces of land. 4. Basin irrigation. This traditional irrigation strategy isn't utilized for developing yields. A raised stage, normally made of mud or cement, is made extremely near these trees. Channels are dug with a road can get water. 2. Modern irrigation. The strategy of artificial irrigation in areas with insufficient rainfall is known as a modern irrigation system. It is the strategy of providing water through pumps, tubes, and sprays. Irrigation is often utilized in regions where rainfall is problematic or where droughts are regular. Water is equitably scattered across the field using various irrigation system procedures. Then all there in the one sprinklers. Source. It includes groundwater springs or wells, surface water means or lakes, rivers or reservoirs, and treated wastewater. What is the next chapter? One irrigation system, which are as follows. 1. Surface irrigation. We'll start in next 5. And not gathering of What? water strategies where What water again? is dispersed by gravity What again? on Okay. the river of the field. 2. Sprinkler I irrigation. get it. A sprinkler water system is a technique for applying This is sprinklers to sprinkler. the goal. System is a procedure wherein water places from a channel. And we have, now directly it goes into the Situated at various distances. drip irrigation. Transmitted to the producer straightforwardly into the soil close to the roots through a fantastic drip delivery canal. It's no hole for the. Subsurface irrigation. Subsurface irrigation systems, assigned a sub-irrigation system, include the water system to crops by applying water from underneath. The soil surface by developing channels or introducing underground cultural pipelines. Find the center pivot each of sprinklers that move on wheel covers in 360 degrees pattern or a circle that would move around the land and sprinkle water all over the soil. I love it good. Give me any one textbook.
Why every time you don't need cover on the camera? ये उसी ने चुप के बोले में बात की थी, है ना? चल. Give me an answer also. Why did we come here, my dear? एक किलोमीटर उधर देखो. Back to me. Which method very easy? वो खतरनाक. Inclined plane method. अच्छा, I'm marking and giving. तो लिख सकते हैं ना, और इसको लिखना भी नहीं. देखो, ये में लेट भी खत्म हो गया है. है ना सर? हाँ तो दो है, बड़ी बस सही. ऊपर वाला लिखा तो guys, you mark and read, that's a good. I've never seen one in questions. Advantage is Black basket. चलो पहले ये मार्क कर लो. उनकी जगह लोगों को. Then will be mineral resources. This one is so I have to teach on 79. highest. Now, it to be there. But I don't know the copy because Tetri is good. वो नहीं बोल रहा हूँ. सीरीज का भी स्टोरी इंक्लूड होता है, बोल रहा हूँ. जो हमारे पास जो सीरीज का स्टोरी होता है, नहीं they are available for example. They are included in the marketplace. Site of the books. Market, ये चलता रहेगा तो अचानक का लोग करो. Okay. इसके बाद conventional and non-conventional. Shall I explain? Complete this process. ये चैप्टर ऐसा है, minerals and energy resources. तो उसमें conventional energy और non-conventional.
थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ by 2 to 10 ये खत्म हो जाएगा तो only explanation little bit same marking ठीक है when you move from agriculture soil and water resources now we are getting into minerals do you think minerals are very important which minerals we make use of generally metallic metallic non metallic भी use करते हैं but minerals होता क्या है as a homogeneous mixture of substances है ना mixture of substances with fixed chemical composition we have done 3 kinds of rocks 9 tell me igneous, second one sedimentary, and metamorphic sedimentary and metamorphic now tell me which rocks you will have more minerals sediment absolutely wrong then it is maximum is igneous rock हाँ, क्योंकि ये कहाँ से आता है molten magma और लावा और हमारा सारा मिनरल्स किधर है and when they come out is the minerals also in the liquid form no yes, these rocks they have lot of minerals in it in India we have a place in Jharkhand come on it is called Chota Nagpur Plateau 90% of the student is written is in Maharashtra but it was earlier Bihar and the present Jharkhand if I say exact देखो तो बचा कितना है only 36% all of the so when I say minerals I always connect minerals with that of the ores how do I define ores now हाँ लिखा है पढ़ के तो बोलो form of different minerals. वाह क्या यूनिटी है I say iron we get it from 4 ores you remember hematite है ना second magnetite third limonite means limonite and siderite and normally these two are minerals in India which is we are getting then I'll write aluminium tell me aluminium is coming from bauxite है कि नहीं तो इस minerals generally I say free gift are the free gift बस ऐसे ही समूह बना के बैठे होते हैं अरे हाथ में फ्री गिफ्ट or not no अरे paying the money to the environment हाँ भाई आ जाना मैं 2 टन खोदा है ये तो the money that you and me are saying is mainly involved for activities called first is mining correct second क्या होता mining के बाद तो बोलो mining के बाद क्या होता है extraction हाँ तो बोलो ना बोलने वाले को बोलो and then products directly purification and then the metals you get it है ना and then you go for product now tell me do you require money for all this तो कैसा फ्री हुआ वो फ्री इसलिए हुआ while digging we are not paying anything to the earth we are not paying anything to the nature but then government के लिए परमिशन लेना पड़ता है ऐसा नहीं कि कल प्लान से भी आप खुद स्टार्ट कर दे एंड हमारा पब्लिक को बोलो कि फ्री है फिर क्या वो बिल्डिंग का नीचे से लेकर दूसरा बिल्डिंग तक टनल ही बना है ना सर ऑयल आ रहा ऑयल कैसे कहूँगा अरे बुद्धू वो इंडियन ऑयल का पाइप जा रहा था तुमने उसको भी खोद के ले लिया आने से ले and the entire village started doing magic हो गया magic मतलब कौन सा magic हो रहा
खेतों के बीचों बीच ऑयल निकल रहा है, वो भी पेट्रोल। मैं नहीं बता, फिर मेरा भाई बोला चल जाके देखते हैं, क्योंकि तो बाइक में भी एंट्रेंस आधा घंटे में बोली सर, तो क्या बोले सर, अरे कुछ नहीं, एक अंडरग्राउंड पाइप चला था, ये लोग ने खोदते खोदते उसको भी खोला, और वो मैजिक बोल, ऐसा मैजिक फिर गर्ल्स में होता तो क्या होता है ना। तो डिगिंग है, माइनिंग है, एक्सट्रैक्शन है, प्रोसेसिंग है, so many things. Then we will group the minerals into here metallic, second is non-metallic, है ना, and third क्या है? As per your volume, energy minerals. What are energy minerals? Which requires energy. Very good. Through which we get energy. What are metallic minerals? Iron, copper, okay, aluminum, and in science you might have already done. Malleable, ductile, you know, mustard, those action then it can teach the what are non-metallic? I'm asking what are non-metallic characteristics? Non-metallic, right? Are the good conductors of electricity? No, sulfur, phosphor, and a magnesium. Magnesium is a good conductor of heat. And then energy minerals are those minerals through which we generally get energy. Then and two, plutonium, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, और एक cadmium, ये अभी आपको chemistry से पता है. Uranium in India we use 235, 238, and very dangerous and very costly. So which energy we are producing? Atomic energy. Do we have atomic energy in India? Yes. Yes, which is the biggest department which produces this? Pronounce it. What are they? Sorry, what is it? Baba Atomic Research Center. Which Baba are we talking about? Patanjali Baba? Who is Jahangir Baba? And my dad being an employee of this, we got our education under this department only. But it's called Department of Atomic Energy Program. Till 12th, we were directly studying here. After 12th only we went to Dadar for studies. If not, हमारा बहुत बड़ा कॉलोनी है. चिरमुड़ी जगह है. बाप PSC उधर है. Cyrus Odomon and it's a very protected place, both for the residents and for the company. So this is what we are going to study. So we'll start with what is minerals, and features of minerals, and then types of minerals, and importance of minerals. Correct? Take out the textbook. Again, no writing. Only take the textbook. अभी आप लोग को एक पॉइंट मुझे बोलना है बस. हाँ, take out the textbook. फ्री है ना? I know right. Manganese and copper. इतना ही है. So directly start with iron ore, market, and show it to me. देखो उसमें 4 ores दिया है, देखो hematite दिया है. What is the other ones? तो ई दिया है, check करो. 4 दिया है. Limonite दिया है, limonite. Then you use the iron ore. एक काम करो, notebook में heading डालो, सिर्फ topic डालो and mark it. Heading डालो, topic डालो, mark it. So that you will not forget this chapter. Very important that. For that one is getting good marks if you are going to this. Marathi ma'am can only decide. आंधेपुगे.com. Oh, what does it do? जैसे शादी.com वैसे Karne Pogi. लड़का कांडा लड़की पोगी. ये कोई क्रेजी टॉपिक्स. ये लाइक क्या देखेंगे तो खाते हैं तो क्या बनाते हैं इसलिए खाते हैं का ये सच है. अरे सब कांडा को बनाने को खाते हैं चाय अच्छा बाकी कुछ नहीं.
business cost management. Second, how to be the. So able to mark it and write the book, you only write the subheading. Are you understanding? Shall I give for I know? फिर आपको लिख रहा है हाँ ठीक है चलो लिखो. So headings के भी points देते हैं. नहीं So not true. I know है उसका कितना I know है हेमंत है. Marking the numbers. Then mark it in the wall. So we have started marking also. इधर है तुम्हारा प्रिंस ये वाला इसका प्रिंट है सेम होता है और ये मैं लोड पा रहा हूँ and हमारा वो ब्लैक कैट कमांड लो हाँ वो किधर है नहीं switch करो. हाँ ये स्कूल ही Not fine. स्कूल भी छोड़ दिया नहीं. we did not forget. हाँ समझ के किया है सही कैमरे का वोट लगाएं तो ये Main club is मैंने बोर्ड में भी लिखा है यू टेल यू बॉय लिमो नाइट है जोर से लिखा लिमो नाइट मत बोलो बोर्ड में लिखा है यू कैन मैग्नेट आई क्या मैग्नेट आई मार्किंग तो किया है हम क्या कर रहा है 2 years studying and 12 years at all I'm laughing when I meet your parents to be keep the next space harsh words for you use this to be use this need only I am हाँ अभी बोल रहा हूँ चलो दोनों है entire chapter is there ना also very hard working देखो चलो दिन पर दिन बढ़ता होते हैं ये अगर उल्टा ही दिन पर दिन lazy और वो भी दूर से ऐसा अपने गुरु going to get some good results when they have to take बॉल को लात मारने के लिए कभी अपने आप को लात मारने के गाड़ी स्टार्ट करो stop all your sports activities of this year Yes. already Yes. what more to say so catch up as finally the result we can have some many now it's not
Get. Can you give me? Sorry. Everyone keep a distribution. I am not making what is that? What are these? A powdered iron radioactive iron black iron. India, open bracket, is fairly rich in iron deposits. Some amount of iron is found practically in all iron deposits. Found in close proximity to the producing core elements. The main iron deposits are in India are first sector is clear. Those are Lico Bailadila, then Rajhara and Delhi. They are places in Jharkhand, Chiria, that is Singham, you bracket and Singham and Palama. And Odisha, the Skianjar, Mayurganj, Sambalpur, Sundargarh, Cuttack, and Koraput. And come to Karnataka, ये लिखो फिर ये because ये एग्जाम में भी पूछते हैं बाबापुरम चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट बेलारी हॉस्पिटल districts. The next Goa, vast deposits of chocolate and coconut. The iron ore of Goa is inferior limonite and siderite. Andhra, Anantapur, Krishna, Kurnool, Kadapa, and Nellore. Okay. Iron ore is found in Salem, Nagpur. District. Then क्या करेगा? महाराष्ट्र, come to चंद्रपुर, रत्नागिरी तो याद रखो, मैंगोज है ना? ये भंडारा है क्या भंडारा है? भंडारा है ना? This is भंडारा. भंडारा is a waterfall area है ना? Close to that Nashik place. Nashik नहीं. कौन सा इगतपुरी? Rajasthan, you Varmaland, Bhilwara and Udaipur. Jharkhand, Naundi and Goa. But then I go, let's see, if time percent, we'll go with next. You will study the next. Only districts you write, regions. ये सब easy है, technicality नहीं है, learn करो. And don't wait for your school test or don't wait for your UT test. There is no harm if you learn early. Rest is in your hand. You can say. मैंने जो distribution में mark किया ना वही लिखो सब. बताओ उसको भी लिखो. नहीं वो मान किया मैंने. बस उसको नहीं लिखना है. जो mark किया ना उतना ही लिखो. ठीक है? तो वो आएगा.
And carefully right now, I did one points. She's very quickly. Lectures haven't tried to learn it also. I could जो नया जगह है careful with the spellings. Let's say now only. Where it is? Jharkhand. That
What's the next climate chapter? That is complete. Over complete. And now we are doing this one. Agriculture. Agriculture from that, what are the main business? Please, back up this what's on here. I'm impressed. This Sunday you guys are having any test of any subject? No. What was the last topic that you have given the test? Nothing. Climate हुआ है ना? यही बात से जो भी टेस्ट नहीं हुआ। मैंने बोला है उसको। हिस्ट्री का हुआ नहीं है। ये टेस्ट है। Anyway, he sees no English or no history. What is the second chapter? No class. Yeah, then next coming Sunday in here. No problem.
So they can time around now there. When I am lecturing, that is the time they easily see. You might not be getting sleep now. Yeah. Okay. Great. पढ़ाई तो नहीं करता है वो समझ में है ना क्या था पढ़ाई really maybe your parents might have forced that is the reason you are sitting तो ये project है ना चलो you guys keep running don't wait for anyone है ना go home have the night lunch sleep पढ़ाई वो भी करना है करो God bless you and see you next week thanks I hope next week it will be the regular timing. So